कुछ ऐसा कि पहले वो हमारे फिर जिम में नहीं लगे होगा बस ये तीन नीचे पे की आर्टिस्ट पकड़ जाए आर्टिस्ट चेक कर ये ये मतलब क्या है ये शहजाद साहब यहाँ के जो है ना क्या कहते हैं काफ़ी छोटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सर ये हमारे स्टूडेंट और स्टूडेंट तो नहीं है वो इनको विजिट करवा रहे थे ये भी नो जी न्यू क्लास स्टार्ट कितने स्टूडेंट हैं देखिए और आए नहीं है वो स्टूडेंट नहीं है मतलब अभी क्लास से ये आज से ये क्लास बस इनको जो है विजिट करवा रहे हैं तेरा तो ये इक्विपमेंट यहाँ पे जो है ना कहाँ से आया वगैरह मैं तो वहाँ से आपके नजराबाद आप भी कंसिडर कीजिएगा अक्टूबर से वो अक्टूबर से लेकिन उनके डिस्कशन के बाद आए अगर देखना चाहती है तो आ जाए अच्छा आए ये है डिग्री की है पीएचडी की तरफ आना चाहती है नहीं नहीं सिर्फ डिपार्टमेंट है ये सब यहाँ पे जो भी होता है आपको भी फर्स्ट सेमेस्टर है ये नहीं है क्या पढ़ी है चार नहीं है पीछे हैं वो तो काफी बड़ी बड़ी क्लास क्लास से है कर रहे थे हमने देखा साथ में भी देखने में क्या है डिफरेंट डिपार्टमेंट है ना तीन डिपार्टमेंट ये नो हमारा ही है इन दो बी में ये सब दे रहे हैं नहीं और भी है वो आएंगे चीजें ना और भी होंगे मैंने ये यहाँ बड़ी बड़ी अजीब चीजें लगती हैं कोई ना Artistic जो काम वाला है। चलो बेस्ट ऑफ लक अच्छा है ये पियानो डिपार्टमेंट हाँ ये सब डिग्री वाले भी यहाँ लड़की जवाब से का मामला आती है ये तो नाम सुना फीमेल्स भी चल ठीक है फिर थेरेपी से ठीक ही होगा ये आपका डिपार्टमेंट है ठीक है ऐसे मैं भी कर लेंगे टेंशन की बात नहीं हां आप ही बोलो ना आप से निकल के हम कर लेंगे नहीं कर लेंगे कोई मसला नहीं है आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप जी जी वो मैं कह रही हूं ठीक है सर ऐसी मजबूर को ऐसी मजबूर को चलो ये सर मेरे गरीब हो गए यार मैं जैसी किताबें नहीं रात रात का ऐसा ना ना पड़ता पहले थोड़ी लेट आओ है सर मुझे लेट आता ना ये यूट्यूबर को देख के जनाब पता ही नहीं सर वो भी ज्यादा कुछ साथ में रिकॉर्ड वाह दैट्स अ केमिकल एक शिजाज साहब आ रहे वेट कौन है सर खोले मैंने बंद किया जी कूपर भी है गेट में हूं माशाल्लाह आज आपसे मिले स्पेशल हाँ बेसिकली रहते हैं तो मेरे पेशेंट आए हुए थे अस्सलाम वालेकुम मैं इसी ऑफिस में थी थे सर हाँ। लाइसेंस तो ट्रेनिंग को मैंने फिर कोर्स किया कोर्स जॉब भी नहीं आई हाँ कोर्स आई लेट की हाँ जी फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं कोई हाँ। हाँ इंशाल्लाह कुछ हो ही जाएगा हाँ तो आपके मियां दुबई में थे ठीक सर दुबई में आजकल बहुत जहाँ पे इस तरह तुसी आके चेकअप कराओ ना इसके तो दुबई में अभी अपोज बहुत ज्यादा
सिचुएशन और आना वो मेरे को नहीं होता बेदोषी होता है या वो दुआ होने ना वो बेदोषी तो है दस्ती नहीं हो सकता अगर नंबर के ना पैसे ओ यार अगर पर्ची के टाइम में फिर वो जुम कर वो कंप्यूटर निकल सी देता ही उसी होता है ओ यार तू फिर यार तू एक तो पता ही नहीं है जी सर लेकिन क्या करें मतलब कुछ चीजें होती हैं इंसान को मजबूरन करनी पड़ती है मैं यहाँ जॉब भी छोड़ना चाह रही थी छोड़नी पड़ी हाँ सर जा रही थी ना मैं फिर छुट्टी नहीं दी 3 महीने की हाँ ये विदाउट पे लीव यस सर मेरा कोई रेफरेंस नहीं है मेरे पीछे खड़े हुए हैं सर रेफरेंस चलता है यहाँ पे इसमें डुबकी कल हम गए हुए पास सीन कह रहे थे तभी हम नहीं खा पाए पास से बड़ा मजा आया मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को अच्छा जी बताना भी है मैं इधर लगा हूँ ना है कोई हाँ मैं इधर लगा हूँ ना मैं खुद ही बता अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम टीलेसो बनाते हैं टोरेकोलम्बोसेक्रल ऑर्थोसिस और इसमें ये होता है ये 3 पॉइंट प्रेशर के साथ बनता है मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए टीलेसो यानी कमर का चेकअप जो है वो बनता है फॉर एग्जांपल अगर किसी के कमर का मोहरा टूटा हुआ है फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए भी ये बनता है और इसके अलावा जो अगर किसी का कमर जो है वो टेढ़ा है तो इसके लिए भी टीलेसो बनता है उसमें स्पाइन के अंदर एक स्कोलियोसिस होता है कमर टेढ़ा होता है लेकिन उसके साथ रोटेशन भी होती है तो इसमें हम लोग जो है वो करेक्ट करते हैं सबसे पहले इसके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले मरीज़ जो है उसका नाप लिया जाता है कमर का नाप लिया जाता है
कमर का मोहरा अगर टेढ़ा हो, कमर का मोहरा अगर टेढ़ा हो या कमर का मोहरा फ्रैक्चर हो, तो फ्रैक्चर के लिए कमर का प्लास्टर नहीं होता, उसके लिए ये जैकेट बनती है। सबसे पहले हम मरीज का जो है वो नाप ले लेते हैं पीओपी जो बैंडेज है उसके ज़रिए, और जब वो ले लेते हैं उसका हमारे पास एक नेगेटिव मॉडल आ जाता है। जैसे आप ये समझिए इसी तरह का एक मॉडल होता है, खाली होता है अंदर से, उसको फिर पीओपी जो पाउडर है उससे फिल कर लेते हैं, स्लेरी बना के उसको फिल कर लेते हैं। उसको जब फिल करते हैं तो उसको एक आध दिन रखते हैं कि वो खुश्क हो जाए, और जब वो खुश्क हो जाए फिर उस मॉडल को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर लगा के पेशेंट की जो मेजरमेंट हमने ली होती है तो उसके मुताबिक, वो मेजरमेंट के मुताबिक इसकी जो है मॉडलिंग करते हैं, ठीक है ना, कि कहीं से इसको, कहाँ से इसको करेक्ट करना है, कहाँ पर दबाव देना है, कहाँ पर इसको जो है रिलैक्स करना है। और अगर कमर टेढ़ा है तो इसमें इस तरह 3 पॉइंट प्रेशर जो है वो, मसलन कमर का मोहरा, कमर की जो मोहरा इस तरीके से टेढ़े हो गए, स्कोलियोसिस बन गया, तो एक प्रेशर हम यहाँ से देते हैं और एक यहाँ से देते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए एक प्रेशर यहाँ से देते हैं, तो उसके साथ कमर जो है वो सीधा हो जाता है। तो एक ये चीज़, इस चीज़ का हम इसमें ख्याल रखते हैं। दूसरे इसमें इमोबिलिटी हम लाते हैं कि अगर मोहरा टूटा हुआ है तो प्लास्टर भी इस मकसद के लिए किया जाता है कि उसको जो है इमोबाइल हो, उस पर मूवमेंट ना हो और उसकी हीलिंग हो जाए, हड्डी जो है वो जुड़ जाए। तो ये जब हम इसको मॉडलिंग करके, तो फिर इसके लिए एक शीट आती है, वो जर्मनी, चाइना वगैरह मुख्तलिफ कंट्री, यूएस से भी आती। तो वो जो शीट है इसको हम लोग ये शीट यहाँ पर पड़ी हुई है, इस तरह की शीट, ये तो खैर अभी वो की, लेकिन वो शीट सिंपल स्ट्रेट शीट होती है, छोटा पीस अगर मिले तो उधर नीचे उसमें उधर बैक साइड पे पड़ी हुई, वो बैक साइड है इधर, थोड़ा सा इसको इधर कर। इसी तरह की एक शीट होती है, जैसे ये शीट है इसी तरह ये शीट है, इसी तरह बल्कि ये शीट है। तो इसको बाकायदा गर्म कर लेते हैं ओवन, ये हमारे पास ओवन है, इस ओवन में इसको हीट अप कर लेते हैं। ये जो है ये ओवन है, इसी के अंदर इसको हम हीट अप कर लेते हैं, और इसके बाद फिर ये होता है कि हीट करने के बाद हम उसको इसके ऊपर मोल्ड कर लेते हैं, और जब मोल्ड कर लेते हैं तो फिर जब शीट ठंडी हो जाती है तो उसकी हम इसको कटिंग कर लेते हैं, काट देते हैं, और वहाँ से निकाल के इसकी जो जो एजेस वगैरह रफ हो या शार्प हो उसको स्मूथ कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है इसके साथ बेल्ट्स लगा दिए जाते हैं और फिर पेशेंट को फिट किया जाता है। तो अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसे कहते हैं कि आप बहुत एहतियात से मरीज़ को एक तो उठाए बिठाए बहुत एहतियात से, और बेल्ट यूज़ कर ले तब तक जब तक ये जैकेट नहीं बनता। तो और ख़ास तौर पे जब उठे तो करवट बदल के उठे, सीधा नहीं उठते हैं, बहुत एहतियात करनी। इसके बाद फिर ये होता है कि जब हम जैकेट उसको पहना देते हैं तो उसका दर्द जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसी जगह वर्टेब्रा को जो है स्टेबल किया जाता है, और ये फिर जैकेट 3 से 6 महीने तक जो है वो लगी रहती है। तो इसमें ये है कि बाज़ औक़ात लोग अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए, खुदा न खास्ता कोई तरफ से गिरे, किसी का एक्सीडेंट हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, तो फ्रैक्चर हो जाता है। उमूमन हमारे पास बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं उनको पता ही नहीं है मोहरा जो है कमर का टूटा हुआ है, तो स्पाइन आपका डिस्टेबलाइज हो जाता है। जब स्पाइन डिस्टेबलाइज हो तो आपको स्पाइन कार्ड इंजरी की चांसेस हैं, खुदा न खास्ता आपकी जो है अगर स्पाइन कार्ड पे कंप्रेशन बढ़ गया तो आपकी टांगों में से हरकत जो ख़त्म हो सकती है, आपकी टांगें जो है वो पैरालाइज हो सकते हैं, आप छोटा बड़ा पेशाब अनकंट्रोल हो सकते हैं। इसलिए इसको स्टेबल करना इंतहाई ज़रूरी है, और वो इसी TLSO के ज़रिए जो है वो मुमकिन है। तो कोई भी अगर इस तरह का मरीज़ हो जो कि उसको फ्रैक्चर है तो उसके लिए 2 ट्रीटमेंट, एक तो है कि इंटरनल फिक्सेशन फॉर एग्जांपल आप करें, आप उसके अंदर रॉड लगे, एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो वो है इसके लिए जैकेट बनता है इसको इमोबाइल करने के लिए। तो हमारे साथ रहेगी अभी किस तरीके से इसको बनाते हैं, तो इंशाल्लाह अभी शहजाद साहब इस पर काम करेंगे, आपको साथ साथ में जो है अपडेट भी करते रहेंगे। स्टे ट्यून, और इंशाल्लाह आपको पूरा प्रोसेस जो है हम बताएंगे।
इसी तरह जो है हमारे पास किसी की अगर टांग कटी हो उसके लिए टांग भी बनती है, अगर किसी का रेस्ट ड्रॉप हो उसके लिए भी बाकायदा जो है WHO बनता है, किसी का फुट ड्रॉप हो तो उसके लिए वो बनता है। तो ये और अगर किसी का जो है फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्चर हुआ है उसके लिए फ्रैक्चर ब्रेस बनता है। ये सारी आजकल टेक्नोलॉजी टाइम जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो लोग प्लास्टर अमूमन नहीं करते। मसलन अगर आपको कोई लेटरल मीडियस मीडियल मीडियस का फ्रैक्चर है एंकल में तो वो फ्रैक्चर ब्रेस आप पहन के उसमें चलना शुरू करता है, अपना काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस पे अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप प्लास्टर करके जो है वो बैठ जाए। ये जदीद टेक्नोलॉजी और इसमें आज आपको हम बताएंगे ये कैसे बनता है, पर अब मरीज हम इसमें कैसे चलाते हैं आपको भी दिखाएंगे। अभी माइक इधर ही खोला हुआ है। ओए सॉरी ये तो नहीं लगा हुआ माइक, मैंने ऑन किया।
आप कहाँ से देख रहे हैं? इधर तो कोई नहीं है। वाह यार, वो शिजा सब को जरा, खटक सबको बुलाना। खटक खटक सब बुला, बुला रहे हैं। मेरा खेल को बुला रहे हैं।
deformities. So, friends, we are here to
आ गया है। असर नहीं आया, नहीं इधर नहीं आया, कहते दो उधर। दो है ना, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, हाँ तो कौन सा? एक एलएसओ है एक टीएलएसओ है, हाँ। टीएलएसओ से मंगवाया है। TLSO। So, okay, you said it. So, this is the fracture base, and you are basically now protecting the patient who is having fracture and has femur. He is already treated by the orthopedic surgeon, and now they have removed the plaster. Yes, true. Okay, so you want to make him safe. Yes, true. Exactly. Okay, so in some braces you are giving pressure, and in some braces you are releasing the pressure. So like in the TL, so what is that size? So what he has Like a patient is having scoliosis, and along the scoliosis he is also having the spinal rotation. Yeah, TLSO is basically is a complicated device and it's used for the trunk orthosis. We call it trunk also. Sometimes we use fracture braces for a trunk, sometimes we use a corrective braces, sometimes we use supportive braces. So maintaining the positioning of a patient to relieve give them a particular vertebral relief, like you can see the TB spine bones become osteoporotic, so we have to provide them support, external support to support the bone and as well as the muscles to prevent from fractures and other deformities. What is this? What are you going to do in this orthosis?
This patient, I think his age is a 10-year-old guy. He came to us with the spinal deformity that is called scoliosis. Okay. And so his angle is less than 45 degrees. I think it's about 40 or 39, 38 degree. So what we are doing here, we are providing him corrective brace, that is scoliosis Boston brace. We will use it, the word Boston brace for this particular corrective brace called design of this orthosis. So what we do, we will apply 3-point pressure on this with the help of this brace. Okay. Yes, ma'am. Dr. Tariba is here with us. She came from the All the way. all the way, and she will enlighten us also about the procedure they adopt in the way also. In the practices. And their practices. We have cleared the lessons. सर लाइसेंस के लिए भी हुआ डेटा फ्लो हुआ था और फिर मेरी डेटा फ्लो से बाद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में मेरी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी, आपको बताया था ना। फिर उसके बाद मैंने कोरू किया, वहाँ पे स्पॉन्सर्ड जॉब्स ही नहीं आ रही, तब मैं इंशाल्लाह कोई के लिए अप्लाई करूँगा। क्विक के लिए? यस सर। अच्छा। चलिए मैं कामयाब करें। आमीन। बोले क्या क्या? नहीं आए ना सर, वही मैं कह रही हूँ। अब मुझे क्या स्पेशल है? जी सर, मेरा क्या issue है उसका? सर टीएलएसओ उनको सजेस्ट किया डॉक्टर ने, तो मैं मशवरे के लिए आई थी कि अच्छा। हाँ वो चाहिए। वो है, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं ना, आपको पेट पर में पड़े हुए। ओह अच्छा, वीडियो बन रही है। नो दरियान। अच्छा। आप नहीं है डॉक्टर साहब, है आप नहीं मैं हाँ, नहीं सर। कह रही हूँ कि मैं बीच में बातें नहीं कर रही हूँ। खैर। तो डॉक्टर्स की बातें हर रिकॉर्ड होती है, पेशेंट्स के फायदे के लिए होती है। तो सर आप अजय भाई को अगर बता दें कि वो आज ही जुड़े। ठीक वो है। गए स्टोर में पीछे। So, Shizad sir, I want to ask one thing. What is the importance of this press, especially in acute case, like people when there is road traffic accident, the people lifting the patient without keeping in mind the care and the procedure. They are just lifting the patient, and most of the patient they don't have spinal cord disease, they are having just fracture in the lumbar vertebra, but when they lift the patient, they cause the spinal cord injury, and the patient come with the problems like when the patient is having weakness in the lower limb and his bowel bladder is not controlled. So, that's how you are highlighting very important point. So this is a burning point, you know, right? Because handling procedures and handling techniques are very much needed in our countries. Because if you are not handling patient properly, so it definitely cost you very high. Because if somebody got vertebral fractures, minor vertebral fracture at the road or some traumatic due to any trauma, so if she is not handled properly, so it can cause them paralysis. You know better than what can be these consequences. If there is a fracture in the spinal cord and if it's not handled properly, it's the same time even same thing happened. It's lower limb fractures or upper limb fractures. You have to be secure their positioning. You have to align their bone properly so that to prevent them for a further injury or a further disability. Yes. Can occur with the time. That is lifetime disability, like privilege is very True. Like- It can be lifetime disability and I think there should be awareness session done for the society, like when there is an incident or accident,
So how they will handle the patient, how they will live. Like in the European countries, in the developed countries, they are training the society, the community, for the handling, for the safe handling of patients. Because all of the work we are doing, that process can be, we can say, the load can be reduced through these type of safety measures. Disability burden can be reduced Yes. from the society if they handle it properly. Yes, that's how I want to ask one thing. You have already taken the task, but now you are putting some slavery on it. What is the reason? Well, I haven't. I had taken the class, but here I am doing. Sometimes when we are handling the patient and patient have a severe pain, like this patient, he has a severe pain, and it was very difficult for me to handle it at that moment. I'm taking a class from the patient, so I wasn't able to correct or to make align the positioning of a fracture position of a patient at that moment. So here I am doing making a necessary correction in the model to keep the alignment properly. Okay, thank you. Shilasa, I have one more question. Like you are working on the prosthesis, making the artificial limbs for the patient. Yeah. So, how much it is important that proper physiotherapy must be done before the pre-prosthetic fitting? What is the importance of physical therapy before fitting a prosthesis to a patient? Being professional, I want you to shed some light on it. Well, it's always a difficult task to make them patient walk on in a prosthetic limb or artificial limb. So before this, we have to make the ready for patient to become able to walk on the prosthesis. I always said my patient, prosthesis will not carry you. You have to carry the prosthesis. You have to use this device. You have to be carry on this. So for this to carry the prosthesis, to use the prosthesis, you have to train your body. You have to modify your body. You have to change your lifestyle, so that prosthesis to get maximum advantage of the prosthesis. So physical therapist has very important, very essential role to strengthen the remaining muscles of a patient, strengthen their limbs, upper limb, lower limb, to make them more stable, to make them more stronger to walk on the prosthesis. It is almost impossible for a patient with the weak muscles or weak body to walk on with the prosthesis without Shilasa, I have seen many patients in my experience. They came with a swelled residual limb, like they have not done any type of exercise. And they come, we want to a prosthesis from you. So I think first of all, the limb should be prepared, like muscle strengthening, weight bearing should be done on it. And some people are coming with the phantom pain. So what is the reason of the phantom pain? Like they are coming to physiotherapist. So what is the reason behind the phantom pain? Is this real pain or is it a psychological condition? phenomenon when the patient used when they had already removed their legs, so they feel that they have a pain, self-frontal pain. We define it in a simple word: when the patient got amputations, there's no real foot is already removed from the patient, but patient still feels that he has a foot and she is feeling a pain on his foot, and he is pain and they feel severe pain. So that phenomenon we call it a phantom pain. So that is a psychologically
So you mean the psychologist should work on it? Psychological should Like the patient should accept it that I have lost my leg. they used to do some mirror therapy for this, physical therapy for this, to Very good. prepare the patient for become familiar with these situations, to adapt themselves. They had went through the education and they don't have the leg now. So for this we have to prepare for the patient that they don't have their they have to work hard. Okay, Shiva. So I have another question. What is the importance of physical therapy after you are fitting prosthesis to a patient? Like in the Gait training, in first time when the patient is working on prosthesis, what is the importance of physical therapy? Well, what is physical therapists always remain with the patient to train them to walk on in the artificial limbs or prosthesis. There is without the help of physical therapist, it is almost impossible for a patient to walk on. It's not importance only; it's essential work. It's essential rehabilitation components. Patient have to went through physical therapy sessions to walk on their legs. Okay. So some of the patients they think that when prosthesis will be made, the weight will come on the residual limb like the end of the stump. So is it true, or when you are making the prosthesis, you are shifting the weight some where else? Well, it's a different techniques, different type of prosthesis that we use. Sometimes we do apply weight and when it's a weight bearing instrument, then you can partially put the weight on that, especially in the case of partial foot amputations or foot amputations are like the patient have a through knee amputations or through hip amputations. So we do apply the weight on the patient and the stomach. But in many cases, we have to shift the patient in the other body segment, other part of the stomach. Like transtibial amputation, we can't put the weight at the end of the stomach because of their body prominency. And same like a transfemoral, we have to use the technique to shift the body. What is the difference between a normal prosthesis and a prosthesis made for diabetic patient? Well, the technique we do use, but the preference we do have for the diabetic patient, it should not be any sort of scar, any type of damage of the tissues when the patient put the weight on it. It should not be done. Otherwise, we have to apply the same mechanical rules, biomechanical rules on the patient. But we have to be safe, keep the safety in our mind when we do diabetic patient in our clinics. Okay. Shazad sir, what is the importance of shoes? Like you are dealing with the different type of foot problem. What is the importance of shoes? Well, you are talking about the normal people, or you are talking about with the prosthesis, or about normal people who are walking on? I'm talking about the normal people. When they are using the hard shoes, like the female who are using the high heel shoes. So, what are you thinking biomechanically? It's good or bad? Like female are doing fashion, they are using the high heel shoes. So, what is the effect on the ankle, on the knee, on the back, and even on the cervical? If we study, you know better.
if we study the human mechanism or human locomotion, it's a very difficult mechanism and very difficult procedure of walking. Whenever we study the human locomotion, there is a lot of forces involved. Uh, Okay. Please continue. lot of आप ज़्यादा फार्म ना दे हमारी Okay. So, Shizad Saab mean to say the role of shoes is very important. Like the shoes is the medium between the human body and the ground, and the medium must be comfortable and safe. If you are using high heel shoes, you will the forces they are coming in front of your knee. The forces are there will be hyperlordosis on your lumbar spine. So the female are having different problem. Like the female who is using continuously the high heel shoes, their hamstring become very tight, and that affect your spine as well. So the reason of this discussion was to use comfortable shoes, like you can walk it in easily. There should be proper space for your toes, and it should be well fitted. It must be comfortable. The shoes are basically it's play a role like a base in a building or the role of tires in a vehicle. So the use of proper shoes, that is very important for the professional, for the general labor, for the office worker. So I think, and secondly, if you are having the weight, most of the weight, if it is on the medial aspect of your foot or it is shifted on the lateral aspect, you must use the foot orthosis. So Shizad Saab will be with us soon and will ask about the importance of foot orthosis. What is the importance of foot orthosis? So I think proper shoes must be used for the office worker, for the players, for the general population, and for the female as well, to stay comfortable and to avoid any injury to your ankle, to your knee, and your leg. So the importance of shoes, is I have already discussed, it is the medium between the human body and the ground. So it is very important, like if you are walking, if you are jogging, if you are jumping, to avoid any type of trauma or injury to your body, you must use the comfortable and relaxed shoe. And secondly, if you are having some foot problem, like you are having pes planus, and you are having the pes valgus, and you are having the hallux valgus, you are having the pes cavus, and the pes planus, in which most of the body weight it comes on the medial aspect of ankle, and the hallux valgus, the big toe is pointing outward, and in the pes cavus there is high arch. If you are having metatarsal pain in the metatarsal region, so you have to use the foot orthosis. Or if you are having the heel spur, like plantar fasciitis, the plantar fascia become inflamed due to the spur formation in the calcaneum, which can be confirmed through X-ray lateral view. So if the patient is having heel spur, he can use the foot orthosis, he or she can use the foot orthosis, he or she can use the heel pad. If a patient in which we are uploading some weight and we are providing a relaxed, comfortable heel cushion to him or her, and she can walk in it easily. And in the when you are having the heel spur or plantar fasciitis, you have to avoid walking with barefoot on the floor, and you have to avoid the flat shoes, and you have to avoid the walking on the hard surfaces, and you have to do some stretches for your ankle, for your calf muscles,
and for your hamstring muscle, for your Achilles tendon, you have to do some stretching. And for the pes planus, like a patient is having flat foot, so you have to use the foot orthosis. And for the pes planus, we are basically elevating the medial arch. So when we elevate the medial arch, we are bringing the pressure. We are basically shifting the pressure from the medial aspect of the foot to the lateral aspect of the foot. So generally people are saying this is just a support or foot orthosis, but mechanically, scientifically, we are basically shifting the weight in it. So the foot orthosis is very much important, especially when it is made scientifically, like in which we are shifting the weight from the medial aspect to the lateral aspect. We are shifting the weight from the forefoot to the midfoot. We are shifting the weight from the midfoot to the heel. Like some of the patients, they are having problem. Basically, if we talk about the normal distribution of weight in foot, so 30% of the weight that comes on the forefoot, and 30% of the weight that comes on the midfoot, and 40% of the weight that comes on the hind foot or on the heel. So this sort of weight distribution is very much important for every human being. If it is not normally distributed, then the patient may got pain in his heel, in his midfoot, in his forefoot. Like in the form of the metatarsal, basically there is no proper rolling in the metatarsal bone, and most of the time the fascia there that become inflamed. And in the hallux valgus, you can see the patient is having hallux valgus, and he and she is using the narrow pointing shoes, like that is quite narrow in the forefoot. So they should use the comfortable shoes or wider toe shoes, like the hallux valgus should be minimized, and he or she should use some support, the orthosis that is be provided by the physiotherapist, by the prosthetic orthotist. So the importance of the foot orthosis is that you first of all you are doing the weight distribution, and secondly you are providing a comfortable support to the patient. Most of the time you can see the runner who are running, most of the weight that comes on the medial side of their foot, and they get the medial collateral ligament injury. If you provide this orthosis, foot orthosis to him or her, they will not get such type of injury. So it is not just given for treating a patient, it is also used for the prevention of those injuries to the ankle. What are you saying, Shaji? Is it right? Yes, you say. Okay. So if a patient is having pain in the heel, like when he strikes the ground, when he is running, when he is jogging, when he is walking, so if we provide him orthosis per heel spur, his heel spur will be relaxed in it, and it will not strike the fascia, and the pain must be reduced. And secondly, in the form of the metatarsalgia, we are providing some room in that, and the patient can walk easily in it. Secondly, it is the problem in foot. They can create problem in the leg, in the knee, and even in the back. Like if you are having pain in your heel, you will shift the weight to the mid and the forefoot. When you shift the weight to the forefoot, your calf muscle become tightened, your hamstring become short, and like you are basically, what are you doing? You are elevating your heel. When you elevate your heel, the weight will be shifted to the forefoot, and the calf, hamstring, and even the gluteal muscle become tight. So then those patients come to physiotherapists that we are having in the pain in the calf region, we are having pain in the hamstring, we are having pain in the piriformis, and we are having pain in the gluteal muscle, we are having pain in the low back, and even in the sacroiliac channel.
So it is better to use the foot orthosis to avoid such type of pain. So this is very much important, that we should timely go to orthotist to make an orthosis according to our shoes, and that can be tested, like when you walk in it, if it is giving some pressure or causing some pain in the region of foot, you can talk to him to reduce the pressure, or to reduce the elevation. Like if you have made an foot orthosis having very high arch, you can reduce it to walk comfortably in it. Secondly, the foot orthosis is also used for the compensating the leg length discrepancy and the shortening compensation. Like if a patient is having one leg that is short and that is causing the back pain, that is causing scoliosis in your back, like you are going with limping gait. So if you use the foot orthosis, that shortening will be compensated, and it will not cause pain in your sacroiliac joint, it will not cause pain in your back, and it will protect you from scoliosis and deformity in the future. So don't avoid these things. If you are having a short limb, use the foot orthosis. Most of the time we are avoiding that, okay, it's a pain and it will be reduced with the time. If you are having shorter limb, you must use the foot orthosis. Secondly, if you are having foot drop, like in the form of the stroke patient, or in the form of any nerve injury due to injective neuritis, and you are dragging your foot and you are trying to elevate, to dorsiflex your foot, it is better to use AFO, ankle foot orthosis, because when you are dragging the foot, you are damaging your nerve. You are not putting proper weight on your foot. So when you will proper do the weight bearing on your foot while using the ankle foot orthosis, this reflex will go to your brain and to your spinal cord and then to brain, and the brain stimulate with it, and the reflexes are coming back in the normal position. The weight bearing is basically a treatment. So you use the ankle foot orthosis if you are having the foot drop. If you are having a fracture in your fibula, in your tibia, or in your medial or lateral malleolus, you can use the fracture brace instead of the general plaster. Like you have done the POP and you are feeling irritated, you are feeling itching, you are feeling some skin condition, like the skin is erosion is started. So use the fracture brace. It is very easy to handle. It is very easy to use. You can put it off. You can apply it again. Even if you want to remove it in the night, you can remove it. So this is the latest technology, and prefer the fracture braces in some conditions. If you are having, your age is above 60-65 years, and you are having diabetes, you are having hypertension, and you have the femoral neck fracture, and most of the surgeons are telling you that we can't do the surgery in it, so you should go to prosthetics, orthotist, and he will make the HKFO for you, in which he will shift the weight to your ischial tuberosity. When the weight will be shipped to the ischial tuberosity, the weight will not come on your femoral neck, and your femoral neck will heal. So don't use the PUB for that. Orthotist, he will take the cross and he will make an orthosis for you, and you will walk in it and you can use it. And if there is shortening, he can also compensate the shortening in it, like he will use some shortening compensation. The foot orthosis tool in it. So Shida Sahib is coming soon.
I was also talking about the TLSO. There are different types of TLSO, like the thoracolumbocervical orthosis, the LSO, lumbosacral orthosis, and the SO, sacral orthosis. So these are used for the different purposes. Like it is used for the TLSO is used for the fracture of in the lumbar vertebra. Most of the time, the patients come in, like in the earthquake in Pakistan, in Nepal. Most of the patients they were having T12 fracture. So it is the last immobile vertebra, and from the L1, from the L1 the mobility start in the lumbar spine. So when a patient is lying below a floor or any sort of bed, like in the earthquake, most of the people, the bed and the walls and the roof, they coming on it. So most of the people, when they drag, when they are pulling the patient, they are causing the T12 vertebral fracture. So the TLSO is made for that, like if the patient is having wedge-shaped fracture and he is having pain and deformity, we can stabilize his spine. We after giving them the TLSO, we can reduce their pain, and we are making them stable and safe. Like we are avoiding spinal cord injury, and it is very important. If you have given a TLSO to a vertebral a patient who is having a vertebral fracture, you have made it, you will make him safe. Like he will not get spinal cord injury in the future, and he can easily move and even can join his office. If a patient is having what he was doing. Okay. So if a patient is having the scoliosis, we can also give him the TLSO, and we are basically correcting his scoliosis in it, and we are even correcting his rotation. Shizad sir is with us. I will ask Shizad sir. I have some questions for him. If he could answer it, and I hope he will give answer very effectively, as he have a lot of experience. Shizad sir is basically working from the last 20 years in the field, and practically he is very much sound. And like the patient come in the wheelchair, and when he is giving any sort of orthosis or prosthesis, the patient start walking in it. लगा रहने दे, हमारा कौन सी अभी बंद नहीं करना। ना 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 लगा नहीं। लगा रहने दे, आप इधर तो गैस के पास लगा दे, इधर ऐसे चले जाए। बाबा भी उन्हें वही बीके कर रहे हैं ना। So this is the below-knee orthosis. We are preparing the below-knee orthosis for the patient Prosthetics. Who have lost the limb below the knee. कालागिरी की है सब मरासी हम्बल रिक्वेस्ट एक बार भाई ना करें जी, हम्बल रोज ना करते हैं। ये ब्रेक से पहले करना, इसके बगैर वो इतना स्कूल जा सकता है ना कुछ ना, रुक जाते तो शिराज भी फिर मुझे बातें सुनाएंगे, बोलेगा तुम्हारे ही काम हमेशा लेट होते हैं। तो लेट तो होना चाहिए, बस इसके लिए तो हम नहीं शिराज आप लोग किस टाइम आए हैं सेंटर में? ना मैं तो 30 से फेरे में आई हूँ ना, लेकिन वो भी बेचारा थका होता है ना, सुबह से 4 फेरे लगा लेते, लेकिन वो उसकी बात भी ठीक है कि वैसे 6 लोग बैठे, बस क्या करेंगे ना करें ना, हमें कुछ खिलाया नहीं है। मैं आप डाइटिंग करने आती तुझी भी डाइटिंग करो ना ऐसी डाइटिंग रहेगी, ओवरवेट करें ये देखो ये चेक करो ना, इसको कम करने ऐसी डाइटिंग पूरी हो गई है, डाइटिंग करते हैं सीधे में कुर्सी ले लेंगे कुछ करते हैं किसी दिन। लाला की लाला तो आपकी फिजिक ज्यादा है, आप मैं तो यकीन करो ये सारा अब एक किलो उठाने के लिए नहीं, पहले से वजन कम है आपका, पहले आप बहुत मोटे थे। नहीं
मेरा अभी ये तो दरमियान में बहुत कमजोर ये है। हाँ बीच में मेरे साथ क्या बोल रहा था शुगर नहीं होगी नहीं मुझे ये हुआ था बहुत मेरा ज्यादा। मैग्नीशियम की कमी है। मेरे हाँ। 1 महीने के अंदर 17 किलो मेरा वजन कम हुआ है। मेरा 10 किलो वजन कम हुआ, डॉक्टर ने कहा पोटेशियम मैग्नीशियम कम हो गया। तो मेरा भी यही हुआ था। मेरा मैं कराची गया था ना तो इसलिए चलें जी अल्लाह सेहत दे करते सेहत हैं तो इंशाल्लाह। सेहत के बगैर तो नहीं हो कुछ सकता। भी नहीं है जिंदगी सेहत के कुछ भी नहीं बगैर। है, अगर कोई इकबाल भाई नहीं। मैं इधर ना हुई ना तो आपने ना हुए तो इन्ना सुनिए लिल्लाह ना, व इन्ना अल्लाह राजिऊन। ना करे हमारा माजूर बच्चे ये स्केलेट आपने स्पीच में दे देने शायद आज के बस पकड़ा देने में जब तक वोट नहीं करा दूंगी इसको ना ये वक्त नहीं। नहीं। बहुत मेहरबानी की शुक्र आप ना हुए तो क्या होगा? इन्ना लिल्लाह जिंदगी इन्ना नहीं रुकती यहाँ, राजिऊन। जिंदगी चलती है। बड़ा प्लीज लोग सब्र हो पाओ यार। रियाज भाई चेक करो अच्छे से दिल से ही। शिद्दती उमरादी का हाँ तरह का दामाला चलो शिद्दती उमरादी का ना हाँ तो घाटे को रखो बे इधर तो सुको रखो ये सो सुद्धा घाटे को कदा घाटे जा तो बोले हाँ नबिया मुरा करा जो कम करो मुरा करे इधर। मुझे पश्तो में आता मैं आपको पूरी समझा देता इस डिटेल में नुकसान क्या है। ये जो है इसमें लचक है, ये कपड़ा है और ये वो हार है। ये रखा बस सब्सक्राइबर चढ़ता प्रति है जी इसको वो कर दूं अभी क्योंकि फॉरेन स्पीकिंग करने क्या अभी दो चलने दे जी घटक साहब साहब नहीं कह रहा हूँ कि बंद कर दो थोड़ी देर बंद कर दो। नहीं उसको उस पे दे दूँ ना हाँ 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 ठीक है क्योंकि वो फिर टाइम लेते हैं चले थोड़ी देर से नहीं लग दो नया लगा दो कोई इशू नहीं। फोर है भी मामलात से अनजान तो न था। ये देखो 132 सब्सक्राइबर है अभी है अभी अभी है हाँ, इससे दिखाता है ना सारा ये देख पहले नूर से ये फुल लेफ्ट है कोई इधर पे पड़ा हुआ है ना हमें क्या पता है कौन से फुल लेफ्ट है। उधर तो कोई नहीं है सर। कब गए कितना अर्सा पहले गए?
2 महीने पहले सब्सक्राइबर किधर गए हैं? सारा ने लिया हुआ है, सारा तो किस वेबसाइट पे बैठ के वो तो करती है ऐसी है। उसको पता है जिस दिन मैंने जाना उस दिन शहजाद साहब को बोलो कि मैं मरीज को बुला लूँ। ये कल करता है क्या? हाँ हाँ, सच में वो कार्य करती है, ये मुझे ही पता है। तो जब वो आ जाए फिर आ जाए। सारी चीजें खराब हो गई हाँ और पर ये शेजर सब नहीं लानी है, नहीं हमसे दस्तूर को सुबह पहले नूर को। इससे जो जो करें ये तो जो नया लाया है नया का ना बेकार था। ये असल नहीं नहीं असल में नया सीजन जब ले लो देखा ना इसका अपना कारीगर बेटा होता है सही ठीक करने के लिए सही है ना इस पे इसका सीलिंग करना है सही है। ये सारी चीजें खत्म हो गई है यार बहुत। नहीं 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 ये मैं वो भेजूंगा और ये सारे ठीक करेगा मतलब आ रहे सही कारीगर को दे देंगे क्या ना फिर ये खुद ब खुद बस भिजवा रहे उसे तो यासीन ने उसकी वीडियो बनानी है।
क्या जी हाँ क्या की ये रिपीट चला क्या सरल सरल वो बुला रही है आपको वो मैडम को बारह 38 बंद होगा जब 12 बंद होगा मैं नहीं मानता
नीचे लेटे हैं अपने। पेट की बल लेटोगी। कौन सा काम है आपका? क्या करिए तो भाई मेरे साथ रियाज ये डॉक्टर साहब ये शेजा साहब कुछ वो कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? वो नहीं है ज़्यादा नहीं। अभी भी तो मेरे चार निकले हैं। ठीक है आप करें काम करें।
हेलो, इकबाल किधर हो आप? यार नीचे अभी ये चाय का टाइम है। यार वो तुम्हारे साथ वो लड़का है बच्चा, मोटरसाइकिल वाला। यार उसे भेजो ना जरा, मुझे इधर कलंदराबाद छोड़े।
है।